Hello, my dear students. Welcome back to Balajee online classes. I am Sadia Khatun, and today I'll be teaching you mathematics of class 7. So, children, today I'll be teaching you chapter number 6 of your textbook, and the name of the chapter is the triangle and its properties. So, आप लोग पढ़ेंगे what is a triangle and what are the different properties of a triangle. So, a triangle is a closed figure having three sides. या फिर आप ये कह सकते हैं इट इज अ क्लोज्ड पॉलीगन हैविंग पॉलीगन तो ऑब्वियसली क्लोज्ड ही होते हैं इट इज अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स एंड वी कॉल इट अ triangle has three sides and three vertices. These are the vertices. Okay, AB, BC and CA are the sides of this triangle and A, B, C are the vertices of this triangle. Next comes the classification of triangles. There are two bases on which we can classify triangles. The first one is on the basis of the sides. For example, okay, this is the first classification in which all the sides of the triangle are equal, and this kind of triangle is known as equilateral triangle. The second one is a triangle in which two of the sides are equal and one side is of different length. Suppose these two are equal and this one is of the different length, then this kind of triangle is known as isosceles triangle. And the last one is scalene triangle. A scalene triangle is the one in which all the sides of the triangle are of different length. So these were the classification of triangles based on the sides. Next is the classification on the basis of their angles. So first one is acute triangle. Acute triangle has all the angles less than 90 degrees. Next one is right angle triangle, in which one angle of this right angle triangle measures 90 degrees. That is why it is called right angle triangle. So this is the right angle triangle. The last one is obtuse angle triangle. A triangle in which one of the angles in this triangle measures more than 90 degrees. That means obtuse angle. So that is why this triangle will be known as obtuse angled triangle. So children, this was the classification. Next comes the properties. The first property that you are going to study is the exterior angle property. Let me tell you what it is. Suppose this is a triangle. This is a triangle ABC. ABC. This is the triangle ABC, and this is the exterior angle. ये इस ट्रायंगल के बाहर है ना, इसके ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं उनके अलावा उनके बाहर का जो एंगल है, दिस एंगल ACD इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल ACD इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स. इसके ऑपोजिट क्या है? इसके ऑपोजिट ये वाले एंगल्स हैं. इंटीरियर जो भी ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उसके इक्वल ये होगा. दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B. एंगल ACD exterior angle is equal to sum of interior opposite angles. This is the first property of triangles that you have to study. The next property is your favorite, it might be, because you have already studied it in class 5th and 6th. That is known as the angle sum property of triangles. What it is? If this is a triangle ABC, then if you sum up all the angles of this triangle, that means angle A plus angle B plus angle C, that will give you the sum as 180 degrees. So the property, the angle sum property states that sum of all the angles in a triangle equals 180 degrees. So children, the next topic is about medians and altitudes in a triangle. Suppose this is a triangle ABC. Median क्या होता है? Suppose मैंने एक vertex इसमें select किया A. इस vertex से एक line draw की जाए इसकी opposite side पर. ये vertex है, इसके opposite कौन सा side है? BC. तो इस साइड पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और वो लाइन ऐसी हो
कि वो BC को बाइसेक्ट कर दे। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो अब ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ किया और BC टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई, तो दिस विल बी नोन एज अ मीडियन। तो जिस तरह A से हम मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं BC पर, सिमिलरली हम लोग B से भी मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं उसके ऑपोजिट साइड पर, दैट इज AC। सो B से हम लोग ड्रॉ करेंगे AC पर, और सिमिलरली C से ड्रॉ होगी मीडियन AB पर। इस तरह से एक ट्राइंगल में हो गई 3 मीडियंस। नाउ कम्स द पॉइंट कि जब कभी तीनों मीडियंस एक जगह इंटरसेक्ट करती हैं, व्हाट इज दैट पॉइंट कॉल्ड? So this is the point of intersection of all the medians in this triangle, and this point is known as the centroid. Centroid of the triangle. Next concept is the concept of altitudes. Suppose this is the triangle ABC. This is an altitude drawn on the side BC. Altitude मतलब एक लाइन ऐसी ड्रॉ की जाए जो ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे। ठीक है, यहां से भी मैं बना रही हूं एक 90 डिग्री का, यहां पर बन गया, और इधर से भी मैं बना रही हूं 90 डिग्रीज का, ये 90 डिग्री यहां पर बन गया। सो ये थे तीनों ऑल्टीट्यूड्स। यहाँ पर आप मार्क भी कर सकते हैं, इनकी लेबलिंग भी कर सकते हैं। This point is the intersection of all the 3 altitudes in a triangle, and this is known as orthocenter. Orthocenter. So children, this was the concept of centroid and orthocenter. Next property is about the inequality. Inequality means, suppose this is a triangle ABC. This property is about the inequality, और वो ये होती है कि अगर आप इनमें से किसी दो साइड को ऐड करेंगे, सपोज आपने AB प्लस BC किया, इस साइड को और इस साइड की लेंथ दोनों को ऐड कर लिया, तो दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, दैट मीन्स AC. It means the sum of any two sides in a triangle is always greater than the third side. So this was the third property of triangles. Children, let me tell you some of the important properties of equilateral triangle and isosceles triangle. So this is an equilateral triangle ABC. Equilateral triangle means having all the sides equal. So इसमें तीनों sides तो equal होंगे ही, उसी के साथ साथ all the 3 angles will also be equal, and one more important thing is that all these angles will measure 60 degree. Equilateral triangle का हर angle measure करता है कितना? 60 degrees. Okay. The next is isosceles triangle. Isosceles triangle की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसमें 2 sides equal होते हैं, कोई भी 2 sides equal हो सकते हैं, ये और ये भी हो सकता था, या ये और ये भी हो सकता है, या ये और ये हो सकता है, A B C। तो 2 sides equal होने के साथ साथ उसके 2 angles भी equal होते हैं, और वो कौन से angles होते हैं? दोनों sides के जो opposite होते हैं। ये AB side है, AB side के opposite कौन सा angle है? C, और AC side के opposite कौन सा angle है? B. That means कि AB is equal to AC, which implies that angle B is equal to angle C. ये भी जरूरी होगा। ठीक है, the last topic of this chapter is Pythagoras theorem. So let me tell you what this Pythagoras theorem is all about. Pythagoras theorem सिर्फ और सिर्फ right angled triangle पर ही लगती है। This is a right angled triangle, right angled at B. ये है ABC, और इसमें राइट एंगल है ये B पर। ठीक, अब आप ये देख लीजिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में इनके नेम्स क्या होते हैं। दिस साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर, और दिस साइड इज नोन एज द बेस। दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, and this side is known as the hypotenuse. So Pythagoras theorem states that hypotenuse square is equal to
the sum of perpendicular square and base square, which means hypotenuse square is equal to perpendicular square plus बेस स्क्वायर. ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग लिखें तो हाइपोटेन्यूज इज AC. AC is equal to AB. AC square is equal to AB square plus BC square. So this is the Pythagoras theorem. So children, your chapter is completed. This was it. I have explained you all the concepts and all the concepts related in this chapter, and I hope you have understood everything. If there is any confusion or any query, then you can ask me out in the live class. I'll explain you there. And the solution of this chapter you will be getting on School Mitra app. Go and download it from there and complete your work. And do remember, Sadia ma'am's rule that maths comes by practice.